हे गाइस, माय नेम इज जॉर्ज और आज मैं एक डिजिटल पेंटिंग बनाऊंगा, एक पोर्ट्रेट सिखाने का कोशिश करूंगा। तो लेट्स बिगिन। आज हम ड्रॉ करेंगे इनको, वन ऑफ माय फ्रेंड। तो सबसे पहले जब आप आउटलाइन बना रहे हैं, पहले से ही डिटेलिंग में मत जाओ, ओवरऑल चीज को देखना शुरू करो। जैसे कि मैं एक ओवरऑल एक शेप बना रहा हूँ और उसके बाद आप धीरे धीरे डिटेलिंग में जाओ। डायरेक्ट एक एक लाइन ड्रॉ मत करो, पहले ओवरऑल शेप ड्रॉ करो, फिर उसके बाद कहाँ आई फिट होगा, कहाँ माउथ फिट होगा, कहाँ आई सॉकेट फिट होगा, वो फाइंड करो। वो उसके बाद धीरे धीरे डिटेलिंग में जाओ और लाइन ड्राइंग होने के बाद फिर आते हैं कलर के ऊपर। तो एक चीज याद रखना, कलर कभी कॉपी मत करना इमेज से, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता। अगर आप कलर को कॉपी करके आप एक पेंटिंग बनाओ तो वो अच्छा नहीं लगता, वो पेंटिंग नहीं लगता। तो ये ये मत करो। कलर आप जब भी करो, जैसे लाइन किया था ब्लॉकिंग के वॉल, जैसे लाइन किया था वैसे ही आपको कलर अप्रोच करना है। आप इमेज में देखो, वहां से एक एक कलर को ब्लॉक करो। आप इमेज को बहुत गहराई से ऑब्जर्व करो, कलर को ब्लॉक में करो जैसा कि स्केच में किया था। कलर को ऐसे शेप की तरह देखो। ओवरऑल कलर करने के बाद डिटेलिंग में जाओ, जैसे कि यार
आप देख सकते हैं पेंटिंग ऑलमोस्ट खत्म है और मैं बैकग्राउंड के ऊपर काम कर रहा हूँ। बैकग्राउंड में मैंने एकदम एक ग्रे कलर दिया है और पेंटिंग ग्रे कलर दिया है और उसके ऊपर थोड़ा सा और उसके ऊपर मैं कलर दे रहा हूँ। मैं टेस्ट कर रहा हूँ कौन सा कलर अच्छा बैठेगा, ब्लू, रेड और पिंक के ऊपर। और पिंक कलर बहुत अच्छा लग रहा है, वो ग्रीन बेस के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। तो आई फाइनल द पिंक कलर बहुत अच्छा लग रहा है। तो या रेडी, फिनिश प्रोडक्ट। हे गाइस, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज गिव ए थम्स अप और सब्सक्राइब करो। आई नीड सब्सक्राइबर। बाय, पीस।